कंगना योर सेंटर जब ट्रेलर रिलीज हुआ उसके 2-3 दिन तक ट्विटर पे गेम चल रहा था, रिप्लाई गेम चल रहा था, रंगोली जी कर रही थी। बहुत सारे देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज कोई हमारे भाई नहीं, बहन है, कोई उनके डेमोक्रेटिक राइट्स आप ले नहीं सकते कि आप कंगना की जो उनको कहना है वो कहते हैं। आप जब वो आप यहाँ पे आए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके पीछे क्या सोच थी, बिकॉज आई एम नॉट माई सिस्टर स्पोक्स पर्सन, बट एट द सेम टाइम इट इज हर फंडामेंट। आपकी वॉल पे तो वो लिख नहीं रही है, उसको लिखने दीजिए जहाँ लिख रही है। आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। वो रोज सुबह बेल तो बजाती नहीं है आर्मी की कि आके मेरे ट्वीट पढ़ो। वो अपना लिख रहती है, कई बार लोगों को टैग भी नहीं करती है। उसको बेचारे को लिखने तो जो लिखना है। ऐसे भी ट्विटर पे क्या लोग अपने गंदे फोटो ही डालते हैं, कुछ तो अच्छा काम हो नहीं रहा है, बट एटलीस्ट शी हैज एन ओपिनियन। जब आप बाहर से आते हैं तो उनको लगता है कि मतलब शायद आप माँ बाप से नहीं जन्मे हैं, किसी पेड़ से टपके हैं। जिस तरह से आपके बारे में बातें होती हैं, जिस तरह से आपको परसीव किया जाता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बिजार, completely bizarre. Like when my sister gave birth to her child, she sent me few pictures and she's like, I want to post them. I said, you're in the hospital bed and they've cut you open. Why do you want to post it? She's like, because tomorrow they will say that this is not your child. She's like, looking at the media, I'm 100% sure they will say, ek to he is so white and like you, they will say, ye isne yahan transfer kar diya. So I'm like, oh, you think so zigzag, but very likely to happen. क्योंकि वो एक तो कर्ली बाल एंड इतना पेल, सो शी इज लाइक ये तो मेरा बच्चा लग ही नहीं रहा है, मोर लाइकली पीपल विल से इसका ही होगा, इसने इसको दे दिया. सो लाइक दैट वी आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन अ सर्टन फियर कि कौन कहाँ से हमें क्या बोल देगा. वही अगेन लाइक दे सी मी थ्रू फेजेस जहाँ पे मेरे घर में काले पर्दे हैं, काली दीवारें हैं, उसमें काला जादू होता है. Like that was the time my sister opened the doors and she's like, I want magazines to cover your house. Because like I'm not a person who will bring magazines into my house, like she's like, no, now I will tweet everything, everywhere you go, what you eat. Because how can you go on every platform and be like, be so defensive? Life becomes so difficult. Does that happen to anybody who's from the film industry? It does not. So it's a very scary thing how outsiders are perceived and what all she's constantly on Twitter. You must have seen that 2 years ago she didn't have time for all that. But she's so protective also because of the bizarre things people talk about outsiders. We feel that everybody sitting over here knows it for a fact that you are perhaps, as far as acting is concerned, there is barely anyone who can beat you at that. So given the fact that it is a fact. Now, given this fact, to a certain extent, do you feel that it is, to a certain extent, very necessary for you to get justified in front of, in front of the media, in front of everyone for that matter, the other actors in the Bollywood industry? Is it very necessary for you to be, is the rest of my life, if I'm wrong, if I'm right, nobody should call me wrong. Or I know it for myself that I'm right. Is it necessary for you to kind of have the justification for that? Well, to be honest, I think your work is a reflection of your inner world. I do feel that all the love that I have is maybe no matter how media perceives me or film industry treats me, but I'm so loved by people. Essentially, that's what matters. But my family feels that it's very harsh. Sometimes the news gets very harsh, so they feel the need of wanting to post things and pictures. And even when I'm in my personal space, she's always posting my pictures, and I'm like, what is this? I don't feel the need, but my family feels that it's important.